जी सितार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेस्ट में इसकी इंट्रोडक्शन बहुत देर पहले हो गई है और वेस्टर्न सोसाइटी ने काफ़ी दिलचस्पी ली है इस इंस्ट्रूमेंट में। क्या ये कमर्शलाइज हो गया है आजकल? कमर्शियलाइज तो नहीं हुआ है, बट इट इज़ ऑलवेज हमारे संगीत में इम्प्रोवाइजेशन इतना ज़्यादा है कि सोशल चेंज का असर उसमें तो होगा ही होगा। बट दैट इन्फ्लुएंस keeps the music ever new. It is ancient music, but it is always old wine put in a new bottle. अगर आप 100 साल पुराना सितार सुनिएगा, वो बहुत ही खूबसूरत सितार था, और 100 साल बाद अभी सुनिएगा तो कुछ it is the same structure, but the permutation and combination have taken different shape. पहले it was without microphone music, so डैना हाथ का बड़ा जोर था और दाड़ादिरी बोल तंत्रकारी जिसको कहते हैं। अब with the coming in of sophisticated sound system, गायकी अंग ज़्यादा बजता है। Vocal effects, the subtle vocal effects one tries to bring in their instrument. Do you think it's a welcoming thought कि ये जो It is a change, and music everywhere changes. In Europe अब अपना बारोक म्यूजिक से क्लासिकल म्यूजिक आया, उसके पहले फोक म्यूजिक था। हमारे देश में भी it was folk music before. Then folk music got polished and became classical music. राग संगीत आया, classical music, which is the best form of Indian music one can get. अब ये तो with time तो एक evolution है ही है। जैसे we change, our dresses change, but the form of the human body remains the same. तो हमारा classicism रहेगा, it will be the same. Only, you know, the presentation will change. प्रोफेसर साहब, इट बी सैड थिंग, बहुत अफसोस की बात होगी अगर सितार का जो ओरिजिनल मोड है वो चेंज हो जाए समय ये के कभी साथ। चेंज नहीं होगा, ये तो ज़्यादा डेवलप होगा। जी हाँ। द मोर यू प्ले, द मोर रिसर्च इज डन, बिकॉज बेसिकली जब हम कुछ करना चाहते हैं, वी हैव टू मूव बाय अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। हाँ जी, हाँ जी। कि हम पांचों एक्सपेरिमेंट किया, दैट वाज नॉट फाउंड सूटेबल, तो 4 was not found suitable, 1 was accepted. ऐसा तो ट्रायल एरर करते करते ही हम लोग वी हैव डेवलप्ड। सितार भी वैसा ट्रायल एंड एरर प्रोसेस में अभी आई थिंक इट हैज डेवलप्ड मच मोर देन इट एवर डिड बिफोर फर्दर। प्रोफेसर साहब, एक डीन का हूँ टू बिकम इम्पोर्टेंट, यानी कि पोजीशन टू विद होल्ड, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? No, actually, I was always teaching. From a very young age, I started teaching in universities. And with my experience, it was natural. Now, the post of, you know, as the head of the classical music section, I have a lot of work. But besides that, I'm also a member of the Board of Studies in a number of universities, like Benares Hind University, which is a very ancient university. I'm also now in the Board of Studies at Rabindra Bharati University. My job is now more in an advisory capacity in the various educational institutions. और मैं सितार का तो अलग सिखाता ही हूँ, because my first love is सितार। It's a companion. और इसी companion को, इसी सितार को आप लेकर गए हैं, सितार the instrument आप लेकर गए हैं all over Europe, Germany, वगैरह वगैरह। And I came at a very young age. You know, when I was about 22, I started coming to Europe, and I took the initiative and struggled. बहुत ही struggle किया जर्मनी, फ्रांस में, because you can imagine उस ज़माने में एक 21-22 साल का इंडियन लड़का who has never been to Europe, वो तो यहाँ का, you know, 14-15 साल का लड़का जैसा, one who stays in Europe all the time. There's a nervousness, there's a fright, there's language problem in France and in Germany. But this struggle has borne fruit, and I have been coming all the years. और हमारे जो सीनियर है पंडित रविशंकर जी बहुत किया, उस्ताद इमरत खान also has done a lot in England for propagating sitar, and for them the root was already there, and we just walked along. हाँ, root or foundation was laid prior to your good self by the great maestros. और फिर कौन से struggle, क्योंकि the instrument was Actually, given you know, the high profile. I'll give you an example. Suppose you know nothing about Europe and you're coming to Europe.
there's one concert today and another. If a person doesn't plan his concerts, the financial side properly, जो मिलते हैं वो तो in Europe with the high cost of living and high cost of traveling, if that is not taken into account, then it's financially it's very difficult to balance a Europe tour. जब उस ज़माने में, when I was 21, 22 years old, I had no idea that this money would be spent on hotels. And in a good hotel, this money can be. It is very easy to spend money in Europe. So this is the struggle. And then if the purse gets empty or nervous, उस ज़माने में. But again, by a process of trial and error, I have learned. And now I know what is what. Yeah, I'm talking about the initial days, the struggle in the initial days. और ये भी था कि सितार as an instrument, one had to. I still have to. It is still not, it's known instrument, but it's not that popular. We still have to show the possibilities of the sitar. That the sitar is a unique plucked instrument. इसमें horizontal movement भी है, not just vertical, not just up and down like a guitar or any other plucked instrument. We have to pull, and this pulling instrument with tremendous possibilities. And the pull, the effort, the vocal effect. To define a raga is very difficult, but the relative emphasis on notes. कोई note को हम emphasize करते हैं, कोई note को emphasize नहीं करते हैं. And the total effect, some phrases are created, and these phrases were there before. And इस मामला में इसीलिए I am saying that the classicism is not lost. The old phrases are still very much there. Skeleton तो वही होता है, लेकिन skeleton पे जो muscle, bones, जो tissues देने, वो आपके हाथों में होते हैं. Sound effect, या permutation combination, या mood, या pulling of the notes, या full stop, comma, punctuation. That the musician, that is a lot. And the combinations are never written down. All improvised. It is improvised. But the structure of the raga remains at the back always. And you keep to it correct there. you, to tell you how to improvise, to tell you what to play. So, and also one, आपने और भी एक बहुत खूबी है प्रोफेसर साहब कि जो आपके साथ तबला प्लेयर्स होते हैं वो एक नहीं होते हैं. I mean you change. कभी yes, it depends. Nowadays everyone is doing this because if a tabla player is offered to you, कि फलाना तबला प्लेयर आपके साथ बजाएंगे, it is very rude to say no. Even if you do not know the person, you have to give him a try. And if you know the person, well and good. So it has been my policy never to refuse any tabla player. If I know him, that he plays sufficiently well, who am I to show disrespect to him? I have always welcomed him. We will come back to the tabla player in a minute, but TV Asia, Asian Morning Program, has got a surprise for you. We would like you to see your performance, which we've got recorded for you and for you at home.
बहुत अच्छा बजाया आपने। और प्रोफेसर साहब, वहाँ के स्टूडेंट्स जो कलकत्ता में सीखते हैं, इंडिया में कह लीजिए, सब कॉन्टिनेंट में कह लीजिए, उनमें क्या फ़र्क है? The students there and students in Europe, abroad. Here, you know, we have two types of students. One is the all European students in Germany, and one the Indian students in England. जी हाँ। Or we have the Indian students in India. फर्क ये है, for the first 6 months, I would say, that the European student picks up remarkably well. For example, the average German is so methodical that he would write each and every detail, draw pictures of the placing of the fingers. और पहला 2 महीना में he will progress as much as I would say an average Indian student in 1.5 years. इतना प्रोग्रेस करेंगे। ये प्रोग्रेस करने का बाद but a time comes very soon when they cannot go any further. जब तक फिक्स नोटेशन है, कॉम्पोजिशन है, वो तो झटाझट अपना वेस्टर्न वे थे, दे टेक डाउन नोटेशन और बजा लेते हैं बहुत ही जल्दी एंड एक्सीलेंट प्रोग्रेस। जब ही इम्प्रोवाइजेशन आता है, the same notes but the Indo-Pakistani flavor doesn't come. अच्छा जी। ये तो अब गामा रे सा, ये तो आहिर भैरव है। हाँ जी। They have a tendency of doing gamma, re, sa, staccato on the notes. The mid गायकी element is a typical our element, जिसके साथ हमारे mental makeup, हमारे literature, हमारे custom, हमारे religion, हमारे गहरी संबंध है। यहाँ मुश्किल होता क्या है, improvisation कुछ अलग हो जाता है। I know ध्रुपद singers in Germany, ध्रुपद सीखे हैं और famous Dagar brothers से सीखे हैं। ध्रुपद जब गाते हैं अजीब सा कुछ, it is everything they are doing, they are following the notations perfectly, but somehow राग खुलता नहीं। But there are exceptions. I know that Peter in America, or I have heard some sitar players here, बजा तो लेते हैं, ठीक ही बजा लेते हैं। I'm talking about the general thing. There are exceptions. 3-4 students ऐसा है बहुत ही अच्छा बजाते हैं। यहाँ जो इंडियन है, हाँ जी, हाँ जी, in England, maybe they don't get that opportunity to learn so well. You know, for example, they also play, but somehow I have a feeling that they don't practice at all. When they come to a class or a series of classes, there is no methodical preparation. यहाँ ही डेडिकेशन शायद नहीं है। कुछ है, इंडिया में भी है ऐसा स्टूडेंट, but majority of them at least know what they're doing. जैसे सिंपल बात, सितार का ट्यूनिंग, सरोद का ट्यूनिंग। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में भी ये है, यहाँ बहुत ज़्यादा है कि ये सितार बजा लेते हैं, ट्यूनिंग करना नहीं जानते। If you cannot tune, then you can only play 30%, 70% is tuning. अच्छा जी। If you can tune perfectly, you're already 70% up in the ladder. Why? It is like being born with a brilliant voice. If you're born with a brilliant voice, then you एक गाना उठा लेना तो बहुत ही आसान चीज़ है। Very few people are born with brilliant voices. They culture it, they practice and do it, but some are there who are born with it. Now they are 70% above already from the start. जी हाँ। और इसमें टेक्निकल ख्याल करने का जरूरत नहीं, कोई भी गाना, any all music is good. शुरू में गाए, लय में गाए तो everything is good. So they can pick up very easily. सितार में भी जिसको ट्यूनिंग आता है, you can say that 70% hurdle he has crossed. क्रॉसओवर हो गया। हाँ। सुब्रता जी, आपके कॉन्सर्ट्स यहाँ भी हो रहे हैं। यू डन यूरोप कॉन्सर्ट्स, आजकल लंदन में हैं, यहाँ कॉन्सर्ट्स? मैं भारतीय विद्या भवन में आज ही बजा रहा हूँ। जी हाँ। वो अपना वेस्ट केंसिंगटन में। हाँ जी। और कल मैं बजा रहा हूँ मेनुइन हॉल सेंट्रल लाइब्रेरी इन पोर्ट्समाउथ, अमित रॉय प्रोडक्शंस। फिर वापस चला जाऊंगा। वापस बैक टू कलकत्ता एज अ प्रोफेसर। बातें तो बहुत सी हैं प्रोफेसर, सब मेडिटेशन का भी इसमें बहुत सा है, योगा एंड स्पिरिचुअल। ये भी सोचिए, इट्स योगा ऑफ द माइंड। प्लेइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, प्लेइंग रागा, भैरव इन द मॉर्निंग, दरबारी कानरा एट नाइट,
all this is also a meditation of the mind. It's an intellectual, it's an intellectual yoga. Stimulating. It's stimulating. Subodha ji, thank you ever so much. बातें तो बहुत सी करनी है, and I want to know a lot more about sitar and the ins and outs. What does ticks you, how you relax. I'm sure we will meet some other time. और बातें करेंगे. Thank you. এবার বাংলায় কথা বলবো। পরে যখন কথা বলবো বাংলায়। When we speak later, we'll talk. I'll make you talk in Bengali. Thank you very much. You have a very flexible tongue. Thank you very much. अभी quickly बांग्ला भाषा में कुछ हमारे audience को आप कहना चाहेंगे? কি বলবো লন্ডন যখন ছেড়ে কলকাতা যাই তখনও একটু হোম সিক হয় মনে হয় যে বাহ লন্ডনে তো বেশ ছিলাম আর এখন তো কলকাতা যেতে ইচ্ছে করছে ওই আমার জন্মভূমির ব্যাপার Thank you. I'm sure all that was wonderful. I hope